Welcome, student. So, self-induction. So, to understand the self-induction, it is a very simple phenomenon. When we pass the current through a coil, due to that current, a magnetic field is produced. And magnetic field generates magnetic lines of forces, which cuts the plane of coil. So, coil is linked with magnetic flux. The reason of why coil is linked with magnetic flux due to magnetic lines of forces which are cutting the plane of coil. Why magnetic lines of forces are cutting the plane of coil? Because due to the magnetic field produced. Why magnetic field is produced? Due to the current flowing in the coil. So whenever the current flowing in the coil is changed, the magnetic flux of the coil changes. तो इसी को हम स्टूडेंट अब लिखेंगे. When a current flows through a coil, और सिंपल है और इंटरेस्टिंग है, it produces magnetic field around it. Around it. And due to this magnetic field, magnetic lines of forces are generated. These magnetic lines of forces cuts the plane of coil. And hence a magnetic flux. इसको अच्छे से लिखिएगा. Magnetic flux is linked with coil. If current flowing through the coil is changed, then the flux linked with the coil, flux linked with the coil also changes. And as a result of it, an EMF is induced in the coil.
and an induced current flows through it. Besides the main current. मेन करंट मतलब जो पहले से फ्लो हो रही थी. This is called self induction. So do you understand the phenomena of self induction? तो इतना इसमें आपको लिखना क्या है जरूरी है. You can ask your questions. So what is self induction? When self induction takes place, when current flowing through any coil changes, the phenomena of self induction takes place. Due to change in current, the magnetic flux linked with the coil changes and an EMF is set up, and due to induced EMF, an induced current flows through the coil, which definitely opposes the main current. Not main current, which definitely opposes the reason due to which it is produced. Why current is induced? Because EMF is induced. Why EMF is induced? Because magnetic flux linked with the coil changes. Why magnetic flux linked with the coil changes? Because strength of magnetic field changes, magnetic field intensity changes. Why magnetic field intensity changes? Because current flowing through the coil changes. So the induced current always opposes the change in main current. And this phenomena is called self-induction. So when you are done, you can tell me. तो फिर हम आगे बढ़ेंगे. So do you understand it? तो आगे हम इसमें लिखेंगे. देखिए, according to sorry, Lenz law, induced current always opposes the change in main current. When the main current is increased, induced current flows opposite to it. Opposite to the main current. You can say that opposite to the main current.
and opposes the increase in main current. And when the main current is decreased, then the induced current flows in the same direction. So better to write it in a proper way. As the induced current opposes the decrease in main current. So we can draw two cases. The first one is this. Written at. We are using a rheostat for change in main current. तो पहला केस हम लिख लेते हैं कि when main current increases. So the induced current definitely flows. This is the direction of induced current, opposite to the main current. So please note it down. Very interesting chapter. क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि करंट हमेशा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। जब आप किसी भी कॉइल से करंट पास करते हैं तो उस करंट के कारण उस कॉइल के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण कॉइल will be linked with the magnetic flux. So whenever the current, अब सेल्फ इंडक्शन को हम बहुत सिंपल वे में भी ऐसे बोल सकते हैं, whenever the current flowing through any coil changes, an EMF is set up in the coil and an induced current flows in the coil. This phenomena is called self-induction. But you should have good notes. So if you have written it, then you can tell me.
तो अब इसको क्लियर करने जा रहे हैं स्टूडेंट। ओके, अब देखिए, व्हेन मेन करंट is decreased, then induced current supports the main current, opposes the decrease in main current. तो आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। ओके, हम आगे बढ़ रहे हैं और एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। Coefficient of self-induction. Let us consider a coil of n turns carrying a current I. Let phi be the flux of one turn. याद रखिएगा, flux of one turn of coil. So total flux of coil will be total flux of coil will be n phi, and we know that a magnetic flux of coil, magnetic flux of coil is proportional to the current flowing through the coil. So n phi will is proportional to I. So n phi equal to Li, where L is called coefficient of self-induction.
So that is the concept of the self induction. तो ये आपने से आप नोट कर लिया होगा, तो हम इसको क्लियर कर रहे हैं. ओके, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? वी नो दैट एल आई इज इक्वल टू एन फाई. इफ आई इज 1 एम्पियर, सपोज करिए इफ आई इज 1 एम्पियर, देन एल इज एन फाई. एल इज एन फाई. तो अब हम इसको लिखेंगे, द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन of a coil is equal to the number of flux linkages with the coil when unit current flows through the coil, flows through the coil. So that is the simple most definition of what you call it, the self-induction. Or in other very simple language, you can say that it is equal to the total flux of the coil when unit current flows through the coil. तो इसको क्लियर करने जा रहे हैं और फिर आगे हम बढ़ते हैं. ओके, EMF induced due to self-induction. If on changing the current flowing through the coil, an EMF is induced, which is also called back EMF. So, using Faraday's law, we have d dt of total flux n phi. But we know that n phi is Li. So, E equal to minus d dt of Li, because L is constant, so it will go out of the sign, minus L di by dt. तो इस फॉर्मूले से अब हम सेल्फ इंडक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं. EMF induced due to self induction.
Okay, so let's move ahead. So self-induction will only take place when current flowing through the coil will change. Otherwise, it will not take place. Okay, so we are making it clear. Unit of self-induction. E equal to minus L di by dt. So L can be written as माइनस साइन की बात नहीं कर रहे ई डी टी अपॉन डी आई इट्स यूनिट इज हेनरी ई हैज यूनिट वोल्ट इनटू सेकंड अपॉन एम्पियर तो हम लिख सकते हैं या आप ऐसे लिख लें 1 हेनरी इक्वल टू 1 वोल्ट 1 एम्पियर पर सेकंड अब देखिए इसको डिफाइन करने के लिए द सेल्फ इंडक्टेंस of a coil is 1 Henry. Coil is 1 Henry when an induced EMF of 1 volt is set up in the coil due to a current changing at the rate of 1 ampere per second 1 ampere per second in the coil ऐसे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं पर यूनिट याद रखिए हेनरी इक्वल टू वोल्ट इंटू सेकंड अपॉन एम्पियर अब हम इसके डायमेंशंस कैलकुलेट करेंगे ओके dimensions of wait a minute self induction अब देखिए हेनरी इक्वल टू वोल्ट इंटू सेकंड अपॉन एम्पियर वोल्ट को हम लिख सकते हैं जूल पर कूलम
or ampere. This is ampere. So we will get joule into second upon ampere into coulomb. एम्पियर इंटू कूलम. अब देखिए जूल को लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर. वेट अ मिनट. जूल कैन बी रिटन एज न्यूटन इंटू मीटर because it is the unit of work. Force into displacement. न्यूटन इंटू मीटर इंटू सेकेंड. और कूलम को लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड. अब न्यूटन को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सलरेशन. केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये प्रैक्टिस होनी चाहिए. इंटू मीटर अपॉन, स्टूडेंट करते नहीं है, एम्पियर स्क्वायर. अब हम इसके डायमेंशन लिख सकते हैं. देखिए केजी स्टैंड्स फॉर एम. मीटर इंटू मीटर एल स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर. सेकंड स्क्वायर ऊपर आ जाएगा टी टू द पावर -2. एम्पियर भी ऊपर आ जाएगा a to the power -2. So this is the way of finding out the dimension of self induction. तो इसको आप नोट कर लीजिए. MLT इसको याद रखना है या मेथड्स देख लें आप कि कैसे निकाला जाता है. ओके. ओके, अब हम आगे बढ़ रहे हैं. बहुत सिंपल कंसेप्ट है. वेट अ मिनट. सेल्फ इंडक्टेंस of a plain circular coil. Okay, let us consider a plane circular coil of radius, plane circular coil of radius r having end turns and carrying a current of I ampere. The magnitude of, क्योंकि सबसे पहले हमें कॉइल का फ्लक्स निकालना पड़ेगा.
और फ्लक्स निकालने के लिए जरूरी है मैग्नेटिक फील्ड निकालना। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। प्रोड्यूस्ड at the center of the coil is mu naught upon 2 Ni upon R. Now, the flux of one turn of coil mu naught 2 Ni upon R into area. इसको नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे? फ्लक्स ऑफ वन टर्न निकालेंगे। And flux of one turn is B into A, where A is the area of the coil. एक coil का area है। अब हमें निकालना है सेल्फ इंडक्शन। नाउ वी कैन यूज अवर फॉर्मूला। अब हम अपना फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। Li equal to N phi equal to Li. N phi equal to Li. So we are going to use that. We are going to clear it. अब देखिए, now Li equal to N phi. तो phi तो हम अभी निकाल चुके हैं, mu naught upon 2 Ni upon R into A. So I will get cancelled. So L will be mu naught upon 2 N square. Area can be written as pi R square upon R. So L can be written as mu naught upon 2 pi N square R. तो ये हमारा हो गया फ्लक्स, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सर्कुलर कॉइल। अब यहाँ बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है कि सेल्फ इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, एल इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो जितना कॉइल का रेडियस ज्यादा होगा उतना ही उसका सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा होगा। तो इस तरह से हम एक सर्कुलर कॉइल के सेल्फ इंडक्टेंस को बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। छोटा सा चैप्टर है सेल्फ इंडक्टेंस का। आफ्टर सेल्फ इंडक्टेंस we are left with mutual inductance, mutual induction and motional EMF. Then we can start with the AC circuits.
तो ये दो बातें आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि सेल्फ इंडक्टेंस नंबर ऑफ टर्न्स को अगर डबल कर देंगे तो वो 4 टाइम्स हो जाएगा। कितने टाइम्स हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देन वी मूव this way we can calculate the self inductance of a plain circular coil. Plain circular coil. Okay. Now the next heading is self, wait a minute, self inductance of a long solenoid. Let us consider a long air-cooled solenoid of length L and area of cross section A, having n closely wound turns. The magnetic field inside the solenoid is B equal to, wait a minute, mu naught n I upon L. Now, magnetic flux of one turn of solenoid B into A. So we have phi equal to mu naught n upon L I into A. That is second equation. तो इसको आप नोट कर लीजिए।
अब देखिए, अब हम इसको, अब वी नो दैट Li इक्वल टू एन फाई, यहां पर हम ये वैल्यूज को पुट कर देंगे जो अभी हमने फाई की वैल्यू निकाली है, दैट इज म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू आई इंटू ए। तो अब आप देखिए आई विल बी कैंसल्ड, so L will be mu naught n square A upon L. So again we have that L is proportional to n square, L is proportional to A. दो बातें बिल्कुल क्लियर है एंड आप इसे नोट कर सकते हैं। ये सब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। अब देखिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अब देखिए क्वेश्चन आया, फाइंड द यूनिट ऑफ L अपॉन R। आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है, L बाय R की यूनिट निकालिए। तो अब देखिए L को आप लिख सकते हैं वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर। R resistance, that is ohm, ohm's law, V equal to IR, R can be written as V upon I, volt upon ampere. So L upon R will be volt into second upon ampere upon volt upon ampere। अब आप देखिए ये तो एम्पियर से तो एम्पियर कैंसिल हो गया और वोल्ट से वोल्ट कैंसिल हो गया। So what you are left with, L upon R is second unit of time। R by L will have unit second inverse, unit of frequency, तो आप इसे नोट कर लीजिए स्टूडेंट। सो L बाय R का क्या यूनिट हो गया आपका, L बाय R का यूनिट हो गया सेकंड, ठीक है। और R बाय L का यूनिट हो गया रिवर्स हो गया, उसका यूनिट हो गया सेकंड इनवर्स, दैट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी।
R is ohm. Ohm can be written as volt upon ampere. तो अब इसको क्लियर कर रहे हैं. ओके, अब देखिए, फाइंड द यूनिट ऑफ एलसी, रूट एलसी. ये सब एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं. So L can be written as volt into second upon ampere. Capacitance farad, Q equal to CV. So Q equal to CV, C equal to Q upon volt. Coulomb upon volt. Coulomb can be written as ampere into second. अब देखिए, हम यूनिट निकालेंगे रूट एलसी. देखिए, वोल्ट into second upon ampere into second अपॉन वोल्ट. अब देखिए, वोल्ट से तो वोल्ट कैंसिल हो गया, एम्पियर से एम्पियर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? सेकंड स्क्वायर. सो सेकंड स्क्वायर कैन बी रिटन एज सेकंड. तो ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए. यहीं से शॉर्ट आंसर्स और दूसरे आंसर्स क्या हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं. नेक्स्ट, तो इस तरह से अब हम इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड वंस द कंसेप्ट इज क्लियर, तो फिर आसानी से आप इसे पढ़ सकते हैं. ओके, तो अब इसको क्लियर कर रहे हैं. ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं. अब एक और यूनिट ऑफ आरसी एक और देख लेते हैं. ओम इंटू फेराड. ध्यान देना, ओम कैन बी रिटन एज V इक्वल टू आई आर. आर कैन बी रिटन एज V अपॉन I. वोल्ट अपॉन एम्पियर. एंड इट इज Q इक्वल टू CV, C इक्वल टू कूलम अपॉन वोल्ट. तो देखिए, वोल्ट तो वोल्ट कैंसिल हो गया. अब कूलम को आप लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड. कितना आसान है, अपॉन एम्पियर. So the answer is second.
अभी को क्लियर हो गया होगा आपको. So this is all theory about what you call it self-induction, a very small chapter. And by the next class, we will be able to complete the mutual induction, and we will start with the uh, motional EMF. So we will be completing the all theoretical aspects of the electromagnetic induction by the next class. We will have some long class. So what is the unit of RC? Second. Second is the unit of time. Second is the unit of time. ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको क्लियर कर रहे हैं. ओम इंटू फेराड, ओम को लिखा वोल्ट अपॉन एम्पियर, फेराड को लिखा कूलम बाय वोल्ट, कूलम को लिखा एम्पियर इंटू सेकंड, फिर एम्पियर से एम्पियर कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया.